आओ जी, आओ जी, आओ जी आयान। Today, Maja House is opening its doors. This is our first session of 2022. And even if it is virtual, we welcome you with warmth. Today, we focus on the ghazal. And we have an outstanding poet here with us, Professor Anisur Rahman, who has just brought out his new book, Hazaaron Khwahisheiin Aisi, the first ever comprehensive collection of Urdu ghazals from its very beginning in the late 16th century to the present. 65 poets from 7 literary periods and diverse locations come together in this collection to showcase the richness of ideas, styles, writing, and they represent the secular and the sacred, the pious, the profane, and it's a veritable feast of this complex and beautiful literary form. Anisur Rahman taught English literature at Jamia Millia Islamia, and he is an outstanding poet and translator. He is currently senior advisor at Rekta Foundation, the world's largest website on Urdu language, literature, and culture. He has published several books on Urdu literature and translations. In conversation with him, we have Professor Guruptesh Singh, who was teaching English literature at Guru Nanak Dev University here in Amritsar. He's a lover of Urdu poetry. He's a translator and a literary critic, and he writes the most fantastic blogs, which I read each time he sends them with, I'm sort of waiting to get them each week. We have with us two readers today who are going to also be reading out some of the poetry that is there in this collection. We have Deepshikha Khaira and we have Gurpratap Singh Khaira also here with us. We're looking forward to an evening, as I said earlier, full of beauty, full of romance, the romance of the ghazal, the romance of the Urdu language, and of course of literature, something that excites me and interests me and has, it's an interest that has kept me alive these last 2 years when we've all been suffering through COVID and shut inside our homes. So welcome everybody, and over to you now, Guruptesh. Please take the evening forward. Thank you very much for this very nice introduction to the session. That's right. Yes, it's the first one of this new year, and I think we wish all of you a very happy and very joyous year. Thank you very much, Dr. Anisur Rahman, to have agreed to join this session. I think Preeti has introduced you very well, and it's a kind of a personal pleasure with me that we have been able to see you after a long time. Of course, your book has been received very well, we know that, and it's kind of making news. And more than that, this is one of the finest things to happen in the world of Urdu poetry, because you have brought in so many of those great poets together in this book. So it's going to be a nice kind of discussion and introduction to ghazal for those people who have not read it as a literary genre. But I'm glad to say that though Punjab में ज़्यादा उर्दू आजकल पढ़ाई नहीं जाती, पता नहीं, फिर भी लोगों का इंटरेस्ट गजल में तो बहुत बरकरार है। गजल लोग अभी भी बहुत खुशी से सुनते हैं, कभी-कभी पढ़ते भी हैं उसको अपने हिंदी वर्जन में. And we have been very lucky that we were close to Pakistan, so lots of singers from Pakistan, they popularized ghazal on this side, and we also have our own great singers like Jagjit Singh and Asha and Lata and Rafi and others, those who popularized this genre. हमारे यहाँ बहुत अच्छे पोएट हुए हैं पंजाब में, पर पता नहीं क्यों ये कुछ पॉलिटिक्स है कि हमको उर्दू पढ़ाना यहाँ बंद हो गई. चलिए, फिर भी कोई बात नहीं. आप जरा इस बात से शुरू करेंगे इस कहानी को, इस टॉक को, कि हमें कुछ बताइए कि उर्दू की गजल इतनी पॉपुलर क्यों है और इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है.
जिससे ये इतनी देर से हमारे लोगों के बीच चल रही है. Thank you, Professor Singh. I'm really grateful to all of you at Maja House, especially you who introduced me to this grand group, and later to Preeti Gill. I got introduced to her, and I can see several friends around. It's great to be here. Therefore, my thanks to you, Maja House, and all those who are associated with this. Having said that, and when you say Urdu has been there in Punjab for a long time, and unfortunately it doesn't have that kind of importance in the sense that it's not being taught and people are not learning that language the way it used to be there. As I said a while ago, that it used to be the sign of a cultivated person in Punjab who knew Urdu. But doesn't matter, because Urdu's legacy is always there, and that should keep us happy. The legacy is more important. Situations keep changing, but the legacy is there. Professor Singh said that how is it that Urdu's ghazal is so popular? There are so many reasons behind that. Many reasons are there, and I would say, to begin with, I would say that Urdu ghazal has an infectious appeal. It infects you, it holds you, it catches you, it doesn't release you that very easily. It is because of the mellifluousness, it is because of the voice, it is because of the rhythm, it is because of the rhyme that Urdu ghazal has in it. It's a world of rare delights and strange mysteries. Although you would know that Urdu ghazal has been, say, stereotyped in the sense that many people say it's all about love, Zulf Rukhsar. Aisa nahi hai. This is not the case. It takes into its fold everything under the sun. It talks of all the experiences that we have, that we pass through in day out and day in and day out. So that way it covers a huge historical period, right from 16th century onwards, late 16th century, when Quli Qutub Shah started writing, who was the 5th emperor of Qutub Shahi dynasty of Hyderabad, Golconda dynasty, so to say. And say this two-line structure is one of the reasons why it's very precise. It doesn't give you more space. And in 2 lines, you have to tell the tale, and you don't have the third line. So therefore, the poet has to be full of impact. He has to create that impact. And he reaches to his reader only in 2 lines. So the precision is one of the hallmarks of Urdu ghazal, and the music that it carries and the idea that it carries. So it's very challenging for the poet to cover and to write about all that he wants to write in 2 lines only. So the challenge is there, but poets have been able to manage that so very well, and that's how we know it. So it's a wonderful way of poetic expression that we have gone through all these years. It harks back in time and space, and that is why it is one of the reasons why it is so popular. Harks back in time and space because it started in the 6th century in Arabia and has had a very long journey from Arabia to Persia to Afghanistan to Turkey to Iran and all, and then finally India, and in India and many other places. So what has happened in the process that it has gathered so much of linguistic vitality. It has learned from other languages. It has learned from Arabic. It has learned from Persian. It has learned from when it reached India. It learned from Rekhta, but it started writing in Rekhta. So what happened that Urdu gathered ground, and Urdu gathered lots of, say, strength from age to age. If you look at the history of Urdu ghazal right from 16th century in India, late 16th century, then we'll find that from age to age, the diction kept on changing. The new experiences got into focus. That is how Urdu came into being. And so, apart from that, as you have very rightly mentioned, that ghazal gaiki, that was one of the reasons how it became so very popular. Many important singers in India and Pakistan have been singing ghazal for a very, very long time. So long and whole night musical stories. Mushaira is yet another platform from Urdu ghazal where it got popularized, and many people go and listen to the poets in the Mushaira, and for a very long time, whole night, long time. Of course, the whole idea of Mushaira has undergone a great transformation. Today, it's not the same kind of Mushaira that we used to have earlier. So things have changed drastically, but the echo of this form of ghazal, echo of this form of poetry is very much there in all ages, and there's a great variety. As you move ahead, we will talk about that variety maybe, and as it comes to you can see and go ahead further. Let me show here to the audience the book. This is the book that I think we were talking about. Am I able to show it the right way? Yeah. This is the book. Now,
you can see it's a kind of a quite a heavy book. It's fairly heavy one, which has got lots of poets as well as their introduction to the time and the work they did. Now, as you say, Anisur Rahman, that ghazal became popular not in Arabia or Persian languages. It also kind of went around and became popular in Turkish, in Uzbekistan, in Afghanistan, and many other countries. But in your preface, you also talk about ghazal being very popular with European languages. And you have talked about how this genre was adopted by English poets or French poets and others. We would like you to tell us something about the way ghazal has been composed in English, and if you would like to read one of the ghazals as an example, it will be great. Okay, fine. The whole trajectory of Urdu ghazal has been extremely interesting. Starting from Arabia in the 6th century, it goes on from place to place, and it reaches from Arabia, it goes to Persia. Let me tell you, then it goes to Spain, goes to African languages, many languages in Africa. It goes to Turkey, it comes to India, it goes to Germany. A poet like Goethe and Ruckert and others who were Indologists, they also wrote ghazals. It went to England, it went to US, it went to Canada, it went to Australia, it went everywhere. And especially when you talk of English, you would come across the date is 1969, when Ghalib centenary year was being celebrated all over. And students of literature would know about Ejaz Ahmed. And when he talked, he was in US at that point of time. When he talked to some of the American poets, have you heard about this poet who wrote in a language called Urdu? His name was Ghalib. And he said, no, who is this? Who's this fellow? Who is this poet? And what is this language? And that the whole initiation took place. That is how he thought of putting together an anthology of Urdu ghazal. And he asked 7, 8 American poets to write ghazals. He explained to them. In a way, he taught them. So many poets started writing, and one of them was Robert Bly, such an important American poet, and Adrienne Rich. So Adrienne Rich started writing ghazals. She says, feverishly I started writing ghazals. And in leaflets and several other places, she wrote about 24 ghazals, one after another, one after another. And then like an infection, it went on from place to place. It reached England, it reached Australia. Australian poet Judith Wright started writing in ghazal, and many Canadian poets started writing in ghazal. So that is yet another. So I'm not talking here of the Hindi and the Punjabi ghazal, and even in Sanskrit you have ghazals available. In Gujarati you have ghazals. You have almost all major Indian languages have ghazals today. But so you have specifically asked about the English ghazal. I will say a few words about that. Say Adrienne Rich says, how is it Ghalib? This is, and you would notice that all these ghazals don't have. It's a wonderful experiment, I would say. And Adrienne Rich said that I had only 2 lines available with me. I didn't have the 3rd line. So it was a big challenge to me. There is no form like this in the English language. We only write a poem, and the poem can be of any length. But in a ghazal, I only had 2 lines for a share, and there was no 3rd line available. Therefore, the challenge was on me. And therefore, she started. But the first few ghazals that she wrote, and others who came to the forefront, they didn't write a ghazal like a ghazal. Therefore, they started learning, and it was Agha Shahid Ali only who taught the American poets and other poets, Australian others also, and Canadians and others, how to write a ghazal. So what is a kafiya, and what is a radif, and what is a line length, and how you move, and how the rhythm is maintained, how the refrain is there, etc. But I'll give you a few examples to just give you an idea of how this ghazal in the English language speaks to you. Adrienne Rich says, how is it Ghalib? How is it Ghalib that your grief resurrected in pieces has found its way to this room from your dark house in Delhi? Now she has broken it into 2 lines. So there is an idea, but you do not find the rhythm and the rhyme and the refrain of the ghazal here. This was the first experiment that she made. Then you have in Canada, I'm just giving you some of the important examples. There is Jim Harrison in Canada, and says, girl of my dreams, if you will be mine, I will give up poetry.
Says, girl of my dreams, if you will be mine, I will give up poetry. Second line, he says, and be your index finger, lapdog, donkey, obvious unicorn. Some kind of a rhythm is maintained here, but it of course doesn't have the same kind of a rhythm that a Urdu ghazal or a Persian ghazal or an Arabic ghazal or a Turkey ghazal would have. But this was a wonderful experiment that poets were making from place to place, and it went from hand to hand. Judith Wright made experiments in writing these ghazals, and she wrote quite a few. She also couldn't do the way it should have been done. For example, she says that my generation is going after long, is dying after long lines, long silences, says, and swing from war to depression to war to fatness. It also doesn't have the kind of rhythm that a ghazal has. But it went from place to place, as I said. Paul Muldoon was another very interesting poet who comes. And they have, as I said, that ghazal incorporates everything. So they have incorporated everything, and he goes to this extent. Paul Muldoon, I'm just quoting you that. It was Aisling who first soft talked to my penis between her legs. While second line, while teasing opened her well-rested between her legs. Now, just to maintain that rhythm of the ghazal, he writes the second couplet and says, again and again that winter, I made a beeline for Eta, for the sugar water sip between her legs. So what he's learned that one has to write certain words at the end of the line. So between her legs, between her legs, between her legs, it is repeated in every couplet. So he's trying to understand what this form is like. So there are many others. John Hollander finally kept and wrote a ghazal in which he describes the whole paraphernalia, how the ghazal can be written. Agha Shahid Ali finally crunched the issue. And I'm just quoting one couplet from Agha Shahid Ali, which is much like this. He says, the only language of loss left in the world is Arabic. The only language of loss left in the world is Arabic. These words were said to me in a language, not Arabic. So he comes very close to the rhythm of the ghazal, and that is how. So this long history, there's a whole, I've written about that, and there's a long chapter that I have done on this in the English ghazal, apart from the introduction that I have there in this book, but there is a different separate paper, separate research that I did on this. So that is how it goes there. Okay, thank you. For those of you who are interested in reading what Ajaz Ahmed did, where he invited about half a dozen American poets to translate Ghalib, this is the book. I mean, if you would like to have a look at it. This is published by Oxford, and I think those of you who are interested, they probably can go to this and see how Ghalib has been reinterpreted in English. Yeah. चलिए अंग्रेजी की बातें छोड़ के अब अनीस जी आपसे बात करते हैं इस किताब के बारे में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये बताइए जरा कि ये किताब का तसव्वुर कैसे हुआ, ये किताब आपने कैसे प्लान की, कैसे इस किताब के बारे में आपके मन में आया? Right. Very interesting. I would like to talk about this, that ghazal had attracted me all through. Because of my family, where people wrote poetry, we read poetry, and there was a natural inclination towards poetry. So one knew two languages, Urdu and English. But then I also learned Persian after I finished my MA. In the school, I had learned Persian, but I had forgotten. But I learned after passing out my MA examination, I learned Persian. So I had luckily 4 languages going with me: Hindi, Urdu, English, and Persian. And I was all the time interested in translation. I always thought, how would a particular work of art, especially a poem, would appear in a different language? What would be the sound? How can that sound be transferred? How could these ideas be transferred? Is there any possibility of taking up the form of one particular language into another? This was a question that kept on bothering me, especially when I started studying literature for my post-graduation, for my PhD and others, and I started teaching. This was a question that kept on nagging. So translation was something I was very naturally inclined towards, and I always thought about if I could try my hands on this. Then I found that Urdu poets were translated, but there was no such anthology which could take care of the entire trajectory of Urdu ghazal from the beginnings to now. Individual poets were there, anthologies were there in which 10, 12, 15, 20 poets were put together. They didn't give you the idea of how the Urdu ghazal started, how it developed, went from place to place and from mouth to mouth, from experience to experience. So I took up on this. I started taking interest in this project, and I took it up.
And it took me a very long time, very, very long time. Let me tell you, it took me 10 years to put all those ideas together, to scan through the entire literary history of Urdu, select my poets. Finally, I selected 65 out of hundreds spread over 500 years. And then I sat on translating those ghazals. So this translation of this ghazal, so I discovered certain techniques for myself by which I could do this. And I think people liked this effort, and that is how this book got so much of notice internationally, both in India and elsewhere. So that is how we started putting together 65 poets you will find in this book, and you will find that there is a long introduction that the book has. And after that, there are 7 different chapters, ages, you could say, that I have divided the whole history of Urdu poetry into according to my own understanding of Urdu poetry. Every age has an introduction of a page or more. Every poet has an introduction of a page and less than a page sometimes. And then there are 2 ghazals in the Roman script that is there, and then there is my translation. So this book gives you a complete window to Urdu ghazal from the 16th century onwards to now. So the last poets you have there are the living poets. So that is how it all started. This was my personal affair with the Urdu ghazal. And then I started a developed affair with putting it into English, and which interests me a lot even today. And this is how I have been able to do it. But it has taken me very long to do it. I always thought that I cannot do it, and I haven't been able to do. But then finally I said, as it is often said, that at one point, you finally abandon the whole exercise of translating because you can't take it any further. So I put a full stop, and then I found a publisher. HarperCollins was there, and they were very happy doing this, and that is how it all came about. हाँ, जरा ये बताइए कि जैसे आपने पहले भी कहा है कि गजल का बड़ा स्ट्रिक्ट मीटर है, एक खास रिदम है, तो आपने उसको भी रखने की कोशिश की है, उसको कायम रखने की कोशिश की है इंग्लिश में. आपने बहुत ज्यादा काफिया मिलाए हैं आपस में, तो ये कैसे किया आपने इसको? कैसे? तो आप राज की बात खुलवा रहे हैं, तो राज मैं खोलूंगा. मुझे कोई तकल्लुफ नहीं, because it is such a wonderful group of listeners here, and this is the place where I should really be speaking. Really, when you go to translate a ghazal, there is a certain bahar जिसको आप कहते हैं, meter. So you cannot write a ghazal by violating the meter that you have chosen for the first line. In all the lines that will follow, और line का मतलब ये हुआ कि 2 लाइनों का एक शेर, तो हर शेर में वही मीटर होगा. The same meter, the same bahar will be there. Now each will have a qafiya and a radif. Radif is a refrain. So my challenge was that let me find one keyword, one catchword, so to say, one refrain, and what this couplet says and what the entire ghazal says. So let me find a key word or a central expression which will hold my attention and subsequently the reader's attention. So suppose if there is something kya hai, so something like that should also be echoing in my translation of the ghazal. I will read you an example, and then will be in a position to understand. So what I did, that I measured the line length. I took the line length into consideration, my line length, which I had transferred from English to Urdu. And then I counted how many syllables are there. And I wanted to maintain that syllabic order from line to line, from one line to another. So if there are 12 syllables, I would love and I would do it. In the second line also 12, then third line. Sometimes it so happened that it exceeded 13. It went sometimes even to 14. I'm just giving you an example, but not very frequently. Then I tried to find out if there is a qafiya in this, and I sometimes found that yes, there was a qafiya. Qafiya is the penultimate word that is before the refrain that it comes, and finally there was a radif. So that is how the technique that I developed, and I did that, waited for it to come back to me in a different form, if at all, and then finally see if it has emerged and it has made some sense. So it has taken so long for me to look at it again and again and again and again. I'll just read you an example so that you can understand what it is that I mean by this line length, by syllable count, etc. Let me read an example. Let me read a ghazal. This is the first ghazal in this book. And this is by Quli Qutub Shah. As I said, he was the 5th emperor of the Qutub Shahi dynasty, of Golconda dynasty, right? And this ghazal that I have selected, and this is the first ghazal of this collection. This is a very well-known ghazal. You have all must have heard it has been sung. It is there, has been there in a film also. Piya Baj Pyala Piya Jaina. Piya Baj Yaktil Piya Jaina. Now listen to my translation. I can't ever drink my drink
without my love. I can't even breathe, I sink without my love. The second share is Kahi the piya bin suburi karu. Kahi the piya bin suburi karu. Kahiya jaye amma, kiya jaye na. I say, I should be patient, you say, without my love. I should be patient, you say, without my love. How unfair. I can't even blink without my love. The third share is Nahi ishq jis wo bada kood hai. Kadhi usse mil bhi siya jaye na. And I say, a bore indeed is one who can't be in love. I'm no bore. I'm on the brink without my love. And the last couplet is, couplet is not the right word, share is the right word here because couplet is different. The last is, Qutub Shah na de muj diwane ko pant. Qutub Shah na de muj diwane ko pant. Diwane ko kuch pant diya jaye. And I say, no counsels Qutub Shah, none to this crazy one. No counsels Qutub Shah, none to this crazy one. I'm the one. I can't even think without my love. So you would see that there is my love, my love, my love all the time. But before that, there is sink without my love, blink without my love, brink without my love, and think without my love. So this is how I try to maintain that rhythm. Syllable count, after that line length, then kafiya, then radif, and the whole mood that the ghazal carries. That is the technique that I try to invent. And that is how it has gone to the readers, and readers' appreciation has made me so happy over the years that I have been able to do this in certain way. Of course, it is always, because when I look at it, I sometimes think that a particular word could have been a better word for this, but that is an endless process, especially in creative writing and translation. This is an endless process. So that is how it started. That is how I measured my work to do this. Thank you very much. I think मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन करने की कोशिश की थी उर्दू गजल की, और ये जो चीजें आपने बताई हैं ये बहुत मुश्किल है इनको हैंडल करना, और उस रिदम को कायम रखना और उस एक खास थॉट पैटर्न को कंटिन्यू करना, ये बहुत मुश्किल काम है और आपने बखूबी किया है, बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक वी विल टेक a little break here and we will ask two of our readers. We have got members of Maja House who would be reading out two of the ghazals from your collection. Wonderful. First of all, I think I'll invite Deepshikha, and she'll be reading one of the ghazals by Shad Azimabad. Please, Deepshikha. Thank you, जी. इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं ये बता दूं कि ये पर्सनल फेवरेट है. ऐसे मैंने पहले भी बोला कि आबिदा ने जो गा दिया उससे बेहतर शायद ही इसे कोई गा सके. और मैं थोड़ा थोड़ा गाती हूँ, तो मैं जब पुराने समय में कभी गाती थी कॉलेज में तो मैं इसे गुनगुनाया करती थी. तो जब मैंने लिस्ट में पढ़ा तो मैंने कहा मैं तो यही पढ़ूंगी. बहुत अच्छा. I'm waiting to hear. ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम. ताबीर है जिसकी हसरतो गम, ए हम नफसो वो ख्वाब हैं हम. ए दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल न हुआ. हम में है दिले बेताब नेहा, या आप दिले बेताब हैं हम. मैं हैरतो हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर. दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम. हो जाए बखेड़ा पाक कहीं, पास अपने बुला लें बेहतर है. अब दर्द जुदाई से उनकी ए आह बहुत बेताब हैं. लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक. ए अहले जमाना कद्र करो, नायाब ना हो कम याब हैं हम. आखिर में जी है मुर्गाने कफस को फूलों ने ए शाद ये कहला भेजा है. आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं.
Thank you very much. Gurudevji, if you allow, let me read just 2 translations of this. Yes, please, please Just do. to, Please do. first 2 shares maybe. हाँ जी, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों. मुल्कों मुल्कों. You would not find me wherever you go. Rare indeed I am. You would not find me wherever you go. Rare. Rare indeed I am. My dreams take to pain and pining. Such a poor dream I am. The second share is, pain, dear pain. Tell me this mystery remains a mystery yet. In me lies a restive heart in me I am. And the last, I'm skipping and I'm just coming to the Shad. This is the Maqta of Yeah. the last shade जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है. Shad, the blossoms have sent a message to the birds engaged. Come on if you may. Even now, I'm a bubbly blossom that I am. Yeah, good. I Thank just you. did three of them. Beautiful. Thank you very much. Very nice. It was a beautiful ghazal. Yeah. Gurpratap Khera, I would invite him now. He is going to read Janisar Akhtar's ghazal. We know him as father of course. Akhtar, the popular Akhtar these days. But I guess he is a great poet, and I think I'm glad that Anisur Rahman has been able to include his poetry in this anthology. Yeah. And this ghazal again has been sung by Mukesh. And this ghazal is Ashar Mere Yun To Zamane Ke Liye Hai. Gurpratap, please. Thank you so much. और without any further ado मैं ये गजल शुरू कर देता हूँ पढ़नी. बहुत सिंपल गजल है और खूबसूरती ये होती है कि एक डिफिकल्ट इमोशन को सिंपल वर्ड्स में कैसे कहना ताकि सबको समझ लग जाए. समथिंग लाइक वर्ड्सवर्थ है. अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए, अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए. बहुत अच्छा. अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं. अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है. अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए, आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे. ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए. वाह वाह वाह, बहुत अच्छा. शेर फकत उनको सुनाने के लिए है. देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, मंदिर फकत दीप जलाने के लिए है. वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए है. सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की. बहुत अच्छा शेर है ये. वरना तो बदन आग बुझाने के लिए. वाह वाह वाह, बहुत उम्दा शेर है, बहुत उम्दा शेर है. सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है. ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं. अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, शेर फकत उनको सुनाने की. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. May I just read 2-3 of my translations here? Yes, please. So that you can look at how it is done in English. Yes. That will. अंग्रेजी के कालिब में कैसे ढला देखें. अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए. My verses are for the world to cheer, but only a few lines for you to hear. But how can I erase all my pains? May I have some pains to hold them dear? If you hold me close, they will prick your eyes. They are dreams for the eyelashes to cheer. When I look at your hands, I find your hands are made to put the temple lamps in cheer. This body's piety is a boon, I know. This body's piety is a boon, I know.
it's also to quench its raging fire here. And the last is, all this living among books and journals is only to keep our memories in clear. Yeah. So this was Janisar's very famous ghazal, Yeah. the English that I could try. Thank my you. hand Thank you to. very much, Anisji. Coming back to the book, I guess, Yeah. a very important question, I think you mentioned it yourself, is Mhm. that out of hundreds of poets who are spread over 5 centuries, you picked up only 65. Right. How did you decide? How did you determine कि कौन सा पोइट यहाँ आना चाहिए और कौन हम इसको ये छोड़ बहुत सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है जो आपने किया, मुझसे और भी बहुत लोगों ने पूछा, कुछ उन शायरों ने पूछा जो छूट गए थे, तो बिल्कुल ठीक, कुछ नाराज भी हैं आज तक, वगैरह वगैरह. दैट इज नॉट माय कंसिडरेशन. एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा, बहुत पॉपुलर शायर नहीं है. मैंने कहा पॉपुलर होना और बड़ा होना ये दोनों अलग अलग चीज, ये दोनों एक चीज नहीं है. My whole idea was to put together a collection of the best voices of 500 years, the canonical voices. तो जैसे कंघी करते हैं ना आप, तो उसी तरह से मैंने कंघी एक फेर दी 500 सालों में के कहा. This is entirely my personal choice, and choices are all the time personal, therefore you may not agree. But I tried to look at the ages, 16th century, 17th, 18th, 19th, 20th, who are the most representative poets. And those who are not only canonical, they are canonical because they have stayed through time. They haven't faded out. तो मैंने ऐसे शायरों की एक लिस्ट बनाई. And this was a longer list. Then I started cutting on that. And again, I started editing on that. And it went from stage to stage. And finally, 65 was where I arrived. That was the magical number for me. And there are some voices here which are not known, which are the modern poets, especially among the modern poets. You have some poets who are not known, but they're so very important for us to understand. There are female voices, some women poets who are known, but they have not been, say, translated or reached other places in the English language, especially. So my idea was to put together through the history of English Urdu poetry, go through the history of English poetry, select the voices that really mattered, that have created an impact on others. They have made experiments with the form, with the language, and they spoke in a manner that no one spoke before them. And therefore, you only have those poets here. So naturally, 500 years, 500 साल में हजारों सैकड़ों शायर होंगे और 65 अगर आप ले रहे हैं, तो one has to be rather choosy in that, and one may not all the time please everyone, one's own self. मैंने भी कुछ ऐसे लोगों को सोचा कि सब इनको ले, लेकिन जो लगा कि दोस्त हैं तो सही, लेकिन शायद देना मुनासिब नहीं होगा. तो that is how I did. So that is how I planned my book. अब मिसाल के तौर पे मैं 16th century में गया, so I thought it was Quli Qutub Shah who has to be there. 17th century I came and I thought Wali has to be there in every way. Wali cannot be left out. And then I went to the 18th century. 18th century is the golden period of Urdu poetry, especially Urdu ghazal. So I lay my hands upon Sauda, then I came to Siraj. Siraj तो बहुत बड़े शायर हैं. खबरे तहय्युर इश्क सुन रहा है परी रही. क्या उम्दा गजल है. और ये वही सिराज है जिनकी दूसरी गजल है, तुम्हारी जुल्फ का हर तार मोहन हुआ मेरे गले का हार. So it's the same सिराज. हाँ, तुम्हारी जुल्फ का हर तार मोहन हुआ मेरे गले का हार मोहन. So I selected Siraj. Siraj couldn't have been left out. I selected Dard, very important Delhi poet of the 18th century. Mir, of course, had to be there, the greatest of all the poets of all the times. And I had Musafi on my list, Inshallah Insha on my list. And this is the 18th century. Then you come to the 19th. Nasikh was there, Atash was there, Ghalib is there, Momin is there, Shad is there. Now these are very important choices, obvious choices. But when you come to later stage, late 19th century and early 20th century, then the controversy starts. People will say that this is important, this is not important, this is polemical, this is not done. So there also I was a little, say, choosy, and I made my choices. I will just give you an idea of how these important poets came into my selection. So into 18th century, I came to Asghar. Asghar was very important poet, and then Jigar is there, Firaq Gorakhpuri is there, Faiz is there, Majruh is there, Nasir Kazmi is there. Nasir Kazmi was born in Punjab, if you would know, you would be aware that he was, Yes.
His son is writing today, Basir Kazmi. He lives in London. So Nasir is there, Majrooh is there, Ibn Insha is there, Khalilur Rahman Azmi, Hassan Naim, lots of people. And then you come to the new ones, Saqi Faruqi, Irfan Siddiqui, and lots of. So my choice is a very limited choice, you could say. But these are the poets who have stayed on. And I have every reason to believe, maybe I'm wrong, the time proves me wrong, maybe I don't know. But I understand that the modern poets that I have chosen from the 20th century especially are the ones who are going to stay on for some time. Okay. कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं. देखिए, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा पोएट और एक पॉपुलर पोएट में बहुत फर्क होता है. हमारे यहाँ जो बहुत अच्छे फिल्मी पोएट भी आए हैं, जैसे साहिर है, कतील है, कैफी हैं, शकील हैं. आपने मजरूह को रखा है, इनको बाहर कर दिया. अच्छा, बिल्कुल सही. एक तो ये है. दूसरी तरफ जो अच्छे शायर माने जाते हैं मेरे हिसाब से, जो मैं तो खैर जितना तो नहीं मैं जजमेंट दे सकता, लेकिन जैसे अहमद नदीम कासमी, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, बहुत अच्छा शेर हूँ समंदर में. आपने कैफी अहमद नदीम कासमी को भी बाहर रखा हुआ है, और ज़ौक़ को भी रखा हुआ, जो कि जफर के. तो ये कैसे, जरा थोड़ा इनके बारे में बताइए कि ये कैसे डिसाइड. मैं जरूर बताता हूँ. जिन शायरों के आपने नाम लिए वो नज्म के शायर हैं. कैफी आज़मी नज्म के शायर, गजल के शायर नहीं. साहिर भी नज्म के शायर हैं, साहिर गजल के शायर नहीं है. और शकील का शायद आपने नाम लिया. अच्छा, शकील गजल के शायर जरूर हैं, लेकिन उनकी गजल उस पाए की नहीं है जो हमारा, जो मैंने एक लेवल तय किया था कि यहाँ तक आने, इसलिए कि वो आवाजें बहुत हैं. शकील के यहाँ जो आवाज है वो हर जगह मिलेगी आपको. और दूसरे नाम जो आपने लिए उसमें अहमद नदीम कासमी. हाँ, तो मजरूह का नाम आपने लिया. मजरूह हमारे सिलेक्शन में है. अकेला फिल्मी शायर, तो इसको फिल्मी शायर के हिसाब से न देखें, बल्कि मजरूह की जो गजल, जो किताब उनकी आई थी, गजल उसका नाम था उस किताब का. मजरूह इज दैट वेरी यूनिक पोएट हु कंबाइंस द क्लासिकल विद द मॉडर्न. और बहुत अच्छी आवाज उनकी है. आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को वन नीड्स टू थिंक अबाउट दैट, कि आज जो फिल्में और जो फिल्मी गाने लिखे जा रहे हैं उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है उसको आप नजर में रखिए. और जिस जमाने में मजरूह की ये गजल आई थी, उस फिल्म में क्या नाम था उसका, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह. ये तो पॉपुलर लोगों के लिए फिल्म बनती है, और क्या वजह थी? What was the reason why at that point of time this ghazal was included in that film and it proved a hit? Yes. So this is a very important question for us to ponder over. कि why is it that today no such ghazal? भाई आज का जो लिरिसिस्ट है उस बेचारे को तो एक म्यूजिकल लाइन लिखने में आफत आती है, वो नहीं लिख पाता. और he doesn't know what is a meter and how it can be turned into. वो तो म्यूजिशियन है, उसको दुआ देनी चाहिए इस सॉन्ग राइटर को, जो म्यूजिशियन है, जो उसके उलट फेर को और ऊंच नीच को बचा लेता है. So what I was trying to do, that the names that you have mentioned, हाँ, कतील शफाई का आपने कहा, कतील अच्छे शायर हैं, लेकिन उस लेवल के बहुत से शायर हैं. फिर तो अगर कतील को हम लेते हैं, जाहिर है कि मैं कदर करता हूँ कतील शायर, आपने एक शेर भी सुनाया. So I like that, but if I chose Qatil, then I would have to choose many more poets. So that was the issue, and that is why, and I couldn't have brought together in one anthology all of them that one liked or the other liked. But ultimately, all said and done, choice is always personal. So yes, this was also a very personal choice. So, but the names that you have mentioned, not because they were from the film world, but because they were poets of ghazal, not ghazal, they were poets of nazm. काफी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, नज्म के शायर हैं, साहिर नज्म के शायर हैं. तो इस तरह से that is how it went. बहुत अच्छे, थैंक यू. जरा ये बताइए कि आपने भी शुरू में भी कहा है कि गजल जो है हम उसको समझते हैं कि ये इश्क की शायरी करती है. तो जरा इसकी डेवलपमेंट बताइए कि ये इश्क से हट के कभी पॉलिटिकल हो जाती है, कभी ये मेटाफिजिकल हो जाती है. ये कब हुआ और कैसे हुआ, और कौन सी चीज पहले आई, कौन सी चीज बाद में आई? वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गजल, देखिए लफ्ज गजल जो है, इफ यू लुक एट द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इट मीन्स टॉकिंग टू द लेडी लव. माशूक से बात करने को गजल कहते हैं, उसका लिटरल मीनिंग ये है. तो when poets started writing, it was love poetry they were basically writing about. But at the same time, this is the most important point one must bear in mind is this, that at the same time,
Love in Urdu poetry has two very important manifestations. One is romantic love and the other is divine love. And it becomes very, very difficult for anyone, any reader. Even the poet doesn't know which love he's addressing. Is it the beloved, the lady, or the divine? So the two loves join hands. तो अगर आप उर्दू या फारसी में कहें तो इश्क हकीकी है, वो डिवाइन लव है, और इश्क मजाजी है जो लेडी लव है. Now sometimes it becomes very difficult to distinguish between which love the poet is talking all about. Is this the lady that he's talking, the mistress, or is it the God that one is talking about? So right from the very beginning, you would see that both went hand in hand. There is no separation. You cannot say that this is purely romantic, because in purely romantic ghazals also you will see that you will sometimes, many students tell me it's very difficult to say that this is not Sufi ghazal. This is not something where the poet is addressing the divine. So divine too is a beloved. And that beloved doesn't have a form, but I know their spirit is there, and therefore. So there are several examples that you will get, especially दर्द जैसा शायर 18th century का शायर है, और आज के शायर को पढ़े आप, कल के पुराने शायर को पढ़े, तो उसमें आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा. अब यही शेर जो मैंने अभी आपको कोट किया, खबरें तहय्युर इश्क सुन्न जुनू रहा न परी रही, which beloved the poet is talking about? हाँ, तुम्हारी जुल्फ का हर तार मोहन हुआ तेरे गले का हार मोहन. Maybe this beloved, maybe that one. And there are hundreds of examples where you will find that. So it came together, it went hand in hand together throughout the history of ghazal, both in Persian and in Urdu, both in Arabic and in Persian, and wherever you go that way. तो आपको लगता नहीं है कि इस चीज ने जो हमारा दुनियावी इश्क है उसको भी बहुत आइडियलाइज कर दिया है, और उससे जो है जो हमारा पोइट्री है जो वो बहुत एक लेवल पे ऊपर चले जाती है, और वो जिंदगी की जो हकीकत है उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है. कुछ शायर जरूर हैं ऐसे. You will find that there are, especially in the classical poets, you will find that there is an element of exaggeration. But if you look at the modern poets, you will find that this is not there. They talk of something which is very earthly, which is very matter of fact, which is day to day, and there is a layer of say a kind of they mythicize the beloved. There are layers and layers of meaning. मैं थोड़े से examples आपको दूं तो शायद आप उसको appreciate कर पाएंगे. Let me give you some examples where you will be in a position to understand. मैं आपको कुछ निज़ाम देखिए. अजब हरीफ था, ये इरफान सिद्दीकी हैं. अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गर्काब देखने के लिए. Now this is something talking about the humdrum realities of life. भाई हम डूबेंगे लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको ले लेंगे. अजब हरीफ था, what a rival he was. अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गर्काब देखने के लिए. अब देखिए एक शेर देखिए कि ये मेरा दिल है, मेरा आईना है शहजादी. There's a very new voice, new tone. ये मेरा दिल है, मेरा आईना है शहजादी, और आईने में गिरफ्तार एक समंदर है. What kind of love is this? और आईने में गिरफ्तार एक समंदर है. It's given that expanse that you can imagine and you can see here. आप देखो ये शेर, देखो कितना अच्छा शेर है. अच्छा सा कोई सपना देखो और मुझे देखो. अच्छा सा कोई सपना देखो और मुझे देखो, जागो तो आईना देखो और मुझे देखो. और दूसरा शेर सुनिए, क्या उम्दा शेर है ये भी. दो ही चीजें इस दुनिया में देखने वाली हैं, मिट्टी की सुंदरता देखो और मुझे देखो. अब आप बताइए कि ये लव पोएट्री है या लव पोएट्री से आगे की बात हो रही है, ये मेटाफिजिकल है, समथिंग इट इज बियॉन्ड. It is very surreal. It takes you into a very different world. It's a very philosophical understanding and apprehension. अब आपको सुनाऊं मैं एक परवीन शाकिर का शेर, सुन लीजिए ताकि आपको ये अंदाजा हो कि कितना एग्जैजरेशन नहीं है, और एग्जैजरेशन है तो किस तरह का है. तेरा घर और मेरा जंगल भीगते हैं साथ साथ. ऐसी बरसातें कि बादल भीगता है साथ साथ. ऐसी बरसातें कि बादल भीगता है साथ साथ. लड़कियों के दुख अजब होते हैं और सच भी अजब. हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ.
हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। मैं एक दूसरा आपको शेर सुनाऊं, देखिए किस तरह का लव है। साईं मेरे खेतों पर भी वो हरियाली भेजो ना, साईं हरियाली नहीं रुत, साईं मेरे खेतों पर भी रुत हरियाली भेजो ना, सखी परिंदों की सखी परिंदों की चहकारें गीतों वाली भेजो ना। Now this is love which is in a wider dimension. It is nature, it is bird, it's atmosphere, it's badal, it's zameen, it's upaj. This is Ishrat Afreen that I have just read out. उसके पहले मैंने आपको परवीन शाकिर को सुनाया। आप देखिए, I will just give you another example. याद करने के जमाने से बहुत आगे हैं, याद करने के जमाने से बहुत आगे हैं, आज हम अपने ठिकाने से बहुत आगे हैं। It has taken to a very different plank altogether. Yes. जिधर निगाह करें एक नया समंदर है, ये ख्वाब है कि कोई ख्वाब का समंदर है। So you see that with the transformation that has taken place, जिस तरह के गजलें कह रहे थे 19th century के पोइट्स, और ज़ौक़ का नाम अभी आपने लिया था, और तो उस जमाने में जो इश्क का तस्वुर था ना, वो the beloved was something very material. You could talk to her, she was there very much. जो बात तक आया चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, etc. But now you see here that the whole situation changes later. Whole situation changes later. So there is a great transformation. The love finds many manifestations. It's nature, it's beloved, it's flesh, it's beyond that. So that is how it's with the development of time, you see as it has progressed from place to place and time to time, from hand to hand. गजल ने एक स्टेज पर प्रोटेस्ट पोइट्री का भी रूप लिया है, आपने देखा। प्रोटेस्ट पोइट्री जिसको हम कभी कभी प्रोग्रेसिव पोइट्री भी कह देते हैं, उसके अंदर उसने जो अपना सिस्टम है उसके खिलाफ भी बोला है, और कई बार उन्होंने लोगों की जो है लाइफ के बारे में, उनकी मिजरी के बारे में, पॉलिटिकल मिजरी के बारे में भी बात की। Protest poetry, people generally would think that in Urdu ghazal there may not be any protest because ये तो इश्क की शायरी है, which is not the case at all. It is not the case at all. Right from the very beginning, अभी तो आप तरक्की पसंद, you just mentioned तरक्की पसंद poets. Of course there is protest very clearly there. तरक्की पसंद ghazal में बहुत protest है, नज़्मों में तो जाहिर है. But you see that this goes back. Actually, writing poetry is a kind of a confession. Poetry is another name for confession, and confession is yet another name for protest. If you look at this, then you will. अब आप देखिए कि जैसे आप देखिए, मैं आपको बहुत पुराने शेर सुनाता हूँ, अब देखिए कि प्रोटेस्ट कैसे आता है वहां पे। ये साहब 18th सेंचुरी का जमाना है, सौदा लिख रहे हैं उस जमाने में, और क्या हुआ है कि मराठा अटैक्स हो चुका है, दिल्ली बर्बाद हो रही है। जो मुझ पे गुजरी मत उससे कहो हुआ सो हुआ, जो मुझ पे गुजरी मत उससे कहो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। फॉरगेटफुलनेस, माफी है, बहुत सफर किया हमने लेकिन मैं माफ। फिर कहते हैं मुबादा हो गई। ये शेर सुनिए, कितना उम्दा शेर है, कितना बड़ा शेर है, और आज आप इसको देखें। मुबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गेर, मेरे लहू को तो दामन से धो हुआ सो हुआ, मेरे लहू तुम्हारे दामन पे धो लो, तुम्हारी बदनामी न हो जाए। देखिए ये 18th सेंचुरी का पोएट है सौदा, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा मेरे लिसनर्स को कि यही आवाज एक 20th सेंचुरी पोएट हसन नईम ने इसी जमीन में गजल कही है। मैं उसका एक शेर आपको सुनाता हूँ। करें न याद शबे हादशा हुआ सो हुआ, दैट नाइट ऑफ इंसिडेंट, उसको मत याद करो। करें न याद शबे हादसा हुआ सो हुआ, भुला दे आओ हर एक हादसा हुआ सो हुआ। So 18th century are finding an echo in the 20th century poet. तो इस तरह से बहुत है। अब देखिए 18th century के दूसरे शायर हैं दर्द, बहुत बड़े शायर हैं दर्द। दर्द ने जब देखा दिल्ली को लूटते हुए और नादिर शाह का हमला हो चुका है, अहमद शाह अब्दाली आ चुका है, तो उसने क्या किया, दर्द ने किनारा कश हो गए, दुनिया से अलग हो गए, बंद हो गए। उनके प्रोटेस्ट का तरीका ये था कि हम अलग हो जाते हैं तुमसे, और ये लिखते हैं, कहते हैं जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब देखिए मोमिन क्या कहते, इंशा क्या कहते हैं, न छेड़े निखते बादे बहारी राह लगम, तुझे अठेलियां सूझी
हम बेजार हाँ। बैठे हैं। वही मशहूर शेर है जिसमें मशहूर गजल है, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं। आप देखिए हजरत मोहानी जेल चले जाते हैं, चक्की पीसते हैं, कहते हैं है इश्क है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत पे चक्की भी पीस रहे हैं। ये तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, ये भी कह रहे हैं और शायरी भी कर रहे हैं। हाँ, तो टपके गलहू और मेरे दीदाए तर से, धड़केगा दिले खाना खराब और ज्यादा, मजाज। तो ये वॉइसेस ऑफ पोइट्री जो प्रोटेस्ट हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैज तो जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट बहुत है उनके यहाँ। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते, ब्रिंग द डूम्सडे, जस्ट कॉल द डूम्सडे। सो बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ है। देखिए मजीद अमजद बड़ा अच्छा शायर है पाकिस्तान को, उसके गजल का एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। जंग भी तेरा ध्यान भी हम भी, ये गजल उन्होंने लिखी थी बांग्लादेश का जो लिबरेशन चल रहा था, उस जमाने वॉर चल रहा था। जंग भी तेरा ध्यान भी हम भी, सायरन भी अजान भी हम भी, सायरन भी अजान भी हम भी, तू भी और तेरी नफरतों के साथ, ये सुनिएगा, तू भी और तेरी नफरतों के साथ, शहर में टिक्का खान भी हम भी, दोनों टिक्का खान बांग्लादेश, रिमेंबर। बिल्कुल। तो इस तरह बहुत है, कुछ कहने का वक्त नहीं है, कुछ न कहो खामोश रहो, ये इब्ने इंशा कह रहे हैं, कुछ न कहो खामोश रहो, ऐ लोगो खामोश रहो, हाँ ऐ लोगो खामोश रहो। तो बहुत कुछ है, आप देखो एक जरा वक्त जरा हमें जदीद शायरों में से बताइए जरा कि जदीद शायर, आपको कौन से पसंद हैं, और उनका कोई कलाम जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और उनमें अच्छा कोई नई वॉइस और या कोई नई मूवमेंट नजर आई हो आपको, तो जरा उसके बारे में हमें बताइए। मॉडर्न पोइट, मॉडर्न अच्छा गजल पोइट्स के बारे मॉडर्न गजल पोइट्स के बारे में आपको जरूर बताना गुरुदेश, मैं चाहूंगा। ये देख रही हूँ कि सैफ इज गिविंग अस में। यहाँ यस, पे आई वो। रीड, या आई हाँ, रीड आउट, आई रीड उनसे आउट। बोलें, नहीं सैफ को बोलें कुछ पढ़े यहाँ से जो वो लिख रहे हैं इधर चैट बॉक्स में। बाद में मैं यही कहता हाँ हूँ, उन्होंने 2-3 अच्छे शेयर हाँ भेजे, लिखे हुए हैं। उन्होंने शेयर भेजे हैं, उनको बाद में हाँ कहते हैं। बिल्कुल। एक कुछ आपने जो अच्छे शायर कई हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मजीद अमजद बहुत पसंद है मुझे, और मोहम्मद अलवी बहुत पसंद है, बानी राजेंद्र मनचंदा बानी बहुत पसंद है, इरफान सिद्दीकी हैं, जो नए शायरों का जिक्र आपने किया, निदा फाजली हैं, सरवत हुसैन हैं, आफ्ताब हुसैन है, लॉट्स ऑफ देम आर देयर। कुछ आपको सुना देता हूँ तो आप हाँ। हर वक्त फिक्रे मर्गे गरीब आना चाहिए, सेहत का एक पहलू मरीज आना चाहिए, सेहत का एक पहलू मरीज आना चाहिए, और दुनियाए बेतरीक में जिस समत भी चलो, दुनियाए बेतरीक में जिस समत भी चलो, रास्ते में एक सलाम फकीर आना चाहिए, कोई तो सलाम कर ले, रास्ते में एक सलाम फकीर आना चाहिए। बहुत मशहूर शेर है, आपने सब सुना होगा, अपनी धुन में रहता हूँ हाँ, मैं भी मैं भी तेरे तेरे जैसा जैसा। हूँ। एक छोटा सा छोटी बहर है, आसान सी है। अलवी साहब कहते हैं, रोशनी कुछ तो मिले जंगल में, आग लग जाए घने जंगल। पेड़ से पेड़ लगा रहता है, ये शेर सुने, पेड़ से पेड़ लगा रहता है, प्यार होता है घने जंगल। आज शहरों में प्यार होगा, पेड़ से पेड़ लगा रहता है, प्यार होता है घने जंगल में। देर तक रोशनी रही कल रात, जहरा निगाह है, देर तक रोशनी रही कल रात, मैंने ओढ़ी थी चांदनी कल रात। हाँ, ये सब है वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू। यस, आपने उनके निदा इंक्लूड की है। हाँ, यस, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। अल्लाह, यस। तरके बादा है और लंबी रात, अब कहते हो शराब छोड़ दो और इतनी लंबी रात पड़ी हुई है, तरके बादा है और लंबी रात, आबे सादा है और लंबी रात, पानी पी के गुजारेंगे इतनी लंबी रात। और फिर कहते हैं तेरी आंखें हैं और दियों की कतार, तेरी आंखें हैं और दियों की कतार, तेरा वादा है और लंबी रात, कैसे गुजरेगी ये रात, लंबी रात, तुमने वादा किया है, दिए जल रहे हैं रात।
बहुत से हैं, मतलब इतने अशार हैं, इतने शायर हैं, इरफान साहब, निदा साहब, सरवत हुसैन, आफ्ताब बहुत अच्छे, हुसैन, बहुत अच्छे। जीशान साहिल, lots of them are there, very promising, very good ones. And हमारी इस महफिल में आज सैफ महमूद भी शामिल हैं। हाँ, उनको तो होना चाहिए बहुत था बहुत जरूर। बड़े, खुद भी उन्होंने किताबें लिखी। सैफ उन्होंने कुछ आदाब। शेयर, आपकी बातें सुनते सुनते उन्होंने कुछ शेयर साफ साफ। हमें भेजे हैं, और जरूर मैं चाहूंगा कि उन्हीं सैफ से सुने, खुद, उन्हीं से हाँ, सुनिए। उन्हीं से सुनते हैं। जरा सैफ जी सुनाइए जो अपने शेयर आपने चैट बॉक्स में भेजे थे। आदाब 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 आदाब। आदाब सर। लेकिन देखिए सर, ये तो बहुत इसको क्या कहा जाएगा कि बदतमीजी होगी कि उस्ताद की महफिल हो और शागिर्द बोलने की हिम्मत करे। ऐसा मत कहो सर। तो ये ताब, ये मजाल, ये ताकत नहीं मुझे। लेकिन मैंने सिर्फ एक शेर जो है खास तौर पे, वो मुझे, आपने अभी जहरा निगाह साहिबा का जिक्र किया है सर, एक शेर पढ़ा भी। जहरा आपा ने मुझे सबसे पहले ये शेर सुनाया था। मीर का शेर है कि कैसा चमन हमसे असीरों को मना है, कैसा चमन हमसे असीरों को मना है, चाके कफस से बाग की दीवार देखना। हाँ हाँ हाँ। तो एक, और तो आपने अभी जी, और आपने अभी जिक्र किया ख्वाजा मीर दर्द का, और तो ऐसे क्या क्या अशार हैं उनके, सौदा और प्रोटेस्ट की जहां बात हो रही थी अभी, तो एक शेर है सौदा का। इर्रेवरेंस देखिए जरा आप उसमें कितनी है, अब आप उसको जिस तरह से लेना चाहें उस शेर को, कि बाजारे मोहब्बत में, ये भी मुझे जहरा आपा ही ने सुना, बाजारे मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, बाजारे मोहब्बत में नबूवत का बहा क्या, एक जन ने लिया मोल नबी चंद दिरहम से। भाई बहुत बड़े शेर आपने सुनाए सैफ दोनों, और जो मीर का शेर आपने सुनाया, तो जाहिर सी बात है कि मीर तो एक दुनिया, मीर का तो नाम मैंने डर से नहीं लिया इसके साहब, मीर पे अगर गुफ्तगू होना शुरू होगी तब तो रात गुजर जाएगी। लेकिन सर तो रात गुजर जाएगी। हम लोग, हम सब की तरफ से एक दरख्वास्त ये तो मैं करने की जुर्रत करूं कि कुछ तो पढ़िए, कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराहना हुआ, तो आप अपना भी तो कुछ कलाम है, उससे भी तो हमें लोग नवाजें। 65 शायर जो इसके अंदर हैं, उसकी तो खाक नहीं हूं मैं, क्या पढ़ूंगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आप उस फहरिस्त में तो आते हैं ना जो शायरी कर रहे हैं, तो इसलिए चलिए सुनाइए कुछ आप। बिल्कुल अच्छा, अब इनसे भी आप सुनाइए, एंड देन मदन गोपाल जी भी हैं। अच्छा, मदन गोपाल जी भी हैं। ओ ग्रेट, क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। कासिम जाफरी भी हैं आज, वहां से लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कासिम साहब हैं? कासिम जाफरी भी हैं। अच्छा, उनसे कहिए बोलने के लिए सच क्या। पहले आप अनिसुर आप सुनाइए पहले, इसके बाद आगे बढ़े। मुझे तो मालूम नहीं था कि मुझे पढ़ने को आप कहिएगा, तो बड़ी मुश्किल कर दी पैदा आपने, इसलिए कि साहब मैं अपने, मेरे सामने तो है नहीं। सुनिए साहब, और मैं जो दो चार शेर यादें सुनाता हूँ। गम की एक कैफियत निशात में हो, गम की एक कैफियत निशात में हो यही कैफियत हयात में हो। वाह वाह। फूल फल सब के सब फना हो जाएं, फूल फल सब के सब फना हो जाएं, सिर्फ मौसीकी डाल पात में हो। वाह। फूल फल सब के सब फना हो जाएं, सिर्फ मौसीकी डाल पात में हो। दर्द से हाथ पांव शल हो जाएं, दर्द से हाथ पांव शल हो जाएं, दर्द यक गुना सारी जात में हो। दर्द से हाथ पांव शल हो जाएं, दर्द यक गुना सारी जात में हो। और कुछ याद नहीं आ रहा इसके और विचार है। इधर मैंने तू जो जाए तो इस तरह, वो वाला शेर कभी तू जो जाए, आपको कैसे याद है भाई? तू जो जाए तो उस्तादी और शागिर्दी वाली बात जो है वो रस्मन नहीं कही थी। तू जो जाए तो इस तरह के कभी तेरा आना भी मुमकिनात में हो, लौट आना भी। बहुत अच्छा। तो ये आपने कहा होता तो मैं तो अपनी नई गजलें सुनाता, ये तो बहुत पुरानी सुना दी मैंने, कोई 20-25 साल या शायद उससे भी पुरानी गजल है, क्योंकि मुझे ये शायद कुछ खुद ही लगते हैं कि शायद ठीक ठाक है, तो पहुंचा दूं आप तक। साहिब एक बार दोबारा पढ़िएगा। कौन से? तू जो जाए, तू जो जाए तो इस तरह की कभी
तेरा आना भी मुमकिनात में हो। वेरी वाह, 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 बहुत बहुत ही अच्छे। कासिम जाफरी साहब, आप अगर हैं तो जरा हमारे सामने पेश हो जाइए। और कासिम साहब को जरूर बुलाएं, कासिम साहब को हाँ, जरूर बुलाएं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत सेशन जो है वो एजुकेटिंग है हमारे लिए, और अच्छा, उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी कि कुछ रिसाइटल भी हो जाएं। वो तो अच्छा। हमने काफी उनकी ख्वाहिश पूरी की है, पर हम चाहेंगे कि अगर वो यहाँ हैं तो हम्म। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ दो बातें करें जरा। नहीं, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कासिम साहब से, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, कि वो तशरीफ लाएं जरूर, बिकॉज इट्स अ प्लेजर लिसनिंग टू हिम। इज अ वेरी, अभी बहुत अच्छा उनका टेस्ट है लिटरेचर का। हाँ, उन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था नासिर काजमी के ऊपर, एक पूरा का पूरा, जी काफी जी जी अच्छी। जी जी। जी हैं कासिम नाथ जाफरी साहब? शायद चले गए हैं लगता है मुझे, पहले थे। उन्होंने कमेंट भी भेजा था जिनके अंदर उन्होंने लिखा था कि ये बहुत, चलिए बहुत अच्छा लगा। अनीस जी, अब वक्त अगर मिलेगा तो मैं दूसरी चीजें सुनाऊंगा, इसलिए कि डायरी मिल गई। अच्छा, पहले आप जरा हमें वेरी ये मिल बताइए कि आपका, क्योंकि एक और आपने कहा है कि नई किताब आपकी आने वाली है जिसमें आप नज्म के बारे में हाँ, बात करना ये चाहते हैं, जरा बिल्कुल जो अब किताब आएगी, देयर इज अ सीक्वल टू दिस बुक। जी उसके बारे में इस थोड़ा किताब बताइए का जरा। वो नज्मों का कलेक्शन है, और वो भी कुली कुतुब शाह से शुरू होता है, लेट 16th सेंचुरी टू नाउ। अच्छा। उसमें कोई 70 शायर होंगे, और हम्म। इससे ज़खामत, यानी उसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए कि, और उसमें मैंने किया ये है कि उसमें तमाम एजेस तो हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ उर्दू पोइट्री आर देयर। सो यू हैव कसीदा, यू हैव मसनवी, यू हैव नज्म जो रेगुलर होती है, क़तात भी हैं, रुबाइयाँ भी हैं, सब कुछ है। और दिस बुक विल कम इन माय हैंड्स, इन योर हैंड्स, इन द मंथ ऑफ अगस्त दिस ईयर, एंड हार्पर कॉलिंस इज अगेन डूइंग दिस बुक। और ये एक कंपेनियन वॉल्यूम इसलिए होगा कि इसका नाम है, अभी जो किताब आपके हाथ में है, दैट्स नोन एज हज़ार ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल। और ये जो आने वाली किताब है, इसका नाम है हजार रंग शायरी, एंड दिस इनकॉर्पोरेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ उर्दू पोइट्री। और मरसिया बहुत मुश्किल था जाहिर है करना, कसीदा बहुत मुश्किल था करना, शेर आशूब मुश्किल था करना, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आर देयर। सो दिस इज नोन एज हजार रंग शायरी, and again it takes care of 18th 16th century onwards to now, all forms of poetry, around 70 poets. August this year. ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, दीपशिखा जी प्लीज आप बोलिए। रहमान साहब, आपने अभी एक मिसाल दी थी मजरूह की, हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह। तो आपने एक लाइन बोली कि वो जो जबान उन्होंने लिखी, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी, क्योंकि वो फिल्मी गाना था, तो जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त के लोगों में उसमें उस जबान के लिए एक एक्सेप्टेंस थी, लोग वो लैंग्वेज समझते थे। नाउ do you think that the language has actually, I mean, I know, I wouldn't say think, do you agree that the language in the masses has deteriorated? अब बहुत सर्चिंग सवाल पूछा आपने। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू एड्रेस। जबान जो है, वो जो हम बोल रहे हैं, दरअसल जबान का बहुत ज़या हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है हमारे ज़माने में। अगर उर्दू के पर्सपेक्टिव में आप जाएं तो आप देखिएगा कि टिल ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल उर्दू पोएट्स जो 50s तक जो बॉर्न हुए हैं, वो पर्शियन जानते थे। 60s के बाद वाले लोगों को पर्शियन नहीं मालूम है, वो सिर्फ उर्दू जानते हैं और हिंदी जानते हैं। तो उनके यहाँ डिक्शन चेंज हो गया। ये फिल्म जो आई थी, इसको आए हुए कोई 40 साल से ऊपर की बात होगी है ना। तो उस जमाने में शायद एक्सेप्टेंस रही होगी, लेकिन आप देखिए कि और भी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे वो फिल्म थी जिसमें कैफी साहब की एक नज्म आई थी, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन। अब देखिए, इसको भी 40 साल से ऊपर हो गया, 50 साल हो गए इस फिल्म को भी आए हुए, और वो फिल्म उनकी बहुत हिट हुई थी, है ना। लेकिन उसमें कोई ऐसा पर्शियन का लफ्ज नहीं है। तो क्या वजह है कि इस तरह की शायरी नहीं हो सकती आज? मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ के, कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो नस्में। लेकिन आज, हाँ, अब आज जो मसला पेश आया है वो ये आया है कि साहब इस तरह के लिखने वाले नहीं है। तो जबान अगर थोड़ी मुश्किल भी है, एक और मिसाल आपको देना, वक्त फिल्म आई थी, स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे, बहुत जमाना याद होगा आपको।
उसमें अख्तरुल ईमान साहब अपनी एक नज्म सुना रहे हैं वक्फ में। क्लास रूम है, शेरवानी पहने हुए हैं, इन टीचिंग ए क्लास, और उनकी एक आवाज नज्म है दूर की आवाज, 6-7 लाइन है उसके अंदर, 6-7 मिसरे हैं, वो सुना रहे हैं। तो साहिर ने अपनी कितनी मशहूर नज्म आपको याद होगी, सना खाने तकदीस मशरक कहाँ है, बुलाओ ये गलियां ये कूचे ये मंजर दिखाओ। उसको तो बदला उन्होंने। लैंग्वेज का तो लॉस हुआ है, लेकिन इस लैंग्वेज को लॉस में हमें रिकवर करने की जरूरत है। नॉट दैट कि हम इसको और मतलब हम उसी की भाषा बोलने लगे जिसने भाषा को खराब कर रखा है। तो क्यों नहीं रिकवर हम की तो सारी बात है सर, रिकवर कैसे होगा? हाउ कैन द डैमेज बी अनडन? देखिए कोई प्रेस्क्रिप्शन इसका नहीं है। अब एक चीज कहूँ कि जैसे आप लिरिक्स की बात अभी हो रही थी, तो व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर दीज लिरिसिस्ट्स, थोड़ी सी ये बात बहुत खुशगवार नहीं है, why is it not possible for these lyricists to read a little more of Urdu poetry and Hindi poetry and try to understand the idiom and at least have some kind of a उस्ताद, कोई उस्ताद ना हो, ऐसे भी पूछ तो लें कि भाई ये जो मैंने लाइन लिखा है ये म्यूजिकल है भी कि नहीं है, कोई इसके अंदर लय है। वो अब गाने नहीं लिखते, वो लय आती है उसके ऊपर वो कुछ बिठा देते हैं। तो लिरिक्सिस्ट बेचारा कम उसकी अहमियत है, बल्कि जो म्यूजिशियन है वो उनको बचा देता है। most of the lines that you listen these days, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखिए वो जो एक गाना आया था वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, लेकिन वो नई चीज थी, आती क्या खंडाला, वो एक बिल्कुल नई चीज थी, लोगों को शॉक कर गई, सरप्राइज कर दिया लोगों को, therefore people liked it. there was no poetry as such, लेकिन उस जमाने की बहुत, और उसमें पोएट्री अगर आप देखिए तो जो मॉडर्न पोएट्री बहुत सी लिखी जा रही, it came close to that also. So what I'm trying to say, these lyricists also need to develop a personal taste and make some effort. अगर यही effort नहीं करेंगे तो naturally what they are handing over will be handing over something which is which shouldn't be accepted as valuable, or something which should be accepted as worth emulating or worth talking about. तो अगर अच्छी चीज आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका एक्सेप्टेंस होगा, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं होगा। प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं है, लेकिन एन एफर्ट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू मेक। जी जी बिल्कुल। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो मैं जरा आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से बोलता हूं कि जो हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर सिबिलेंट्स थे, जिसको हम टेक्निकली यूबुलर साउंड्स भी कहते हैं, वो साउंड्स भी अब बहुत बुरी तरह गायब हो रही हैं। ज नहीं लोग बोल सकते, गा नहीं बोल सकते, खा नहीं बोल सकते, फ नहीं बोल सकते। तो उससे जो भी थोड़ी सी ना जो नुकसान हुआ है, जो नफासत थी उर्दू की, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। चलिए, मैं before we wind up this session, I think I'll ask Madan Gopal ji if he's still there, if he can say something. He's not. He's left. Not there? Okay. No, he's left. But Padmini Mungia from the US has sent a question. Okay, she's here. About good. Women ghazal writers. Yeah. What about? So if you can talk about them also present day. Yeah, please talk about them in present times too. क्या अच्छा सवाल women writers के बारे में। एक one thing which one must keep in mind is this, that if you look at the Indian scenario, there are not many women writers who write here. The reasons can be very obvious, but there are very, very important women writers in Pakistan. Very, very important women writers. If I don't go much in the past, let us remember Fahmida Riaz, one of the most significant poets who ever wrote. Kishwar Nahid is another very important voice. Parveen Shakir is good. Parveen Shakir, but more important is Ishrat Afreen is there. And Kishwar Nahid ke saath Zahra Nigah is there. Ada Jafri is there. Whole lot of say about, I just did a paper on this, Pakistani women poets in English. And I could see that not only the ghazal, jo nazme unhone likhi hain, the regular poems that they have written, and the kind of a strong feminist voice that they have raised from there is something very, very substantial, something very, very unprecedented, and something very, very remarkable. I don't know if in any other language, including Hindi, Punjabi, and others, because if you read these poets, especially Kishwar Nahid and Fahmida Riaz, and after that so many of them, Ishrat Afreen that I have, Fatima Hassan, for example, several, not less than a dozen. And Nasreen Anjum Bhatti is a very significant voice from there.
So if you read these voices, you will see something very fresh has come up. इनके influence नहीं है इस तरह का कोई. ऐसा लगेगा कभी कभी आपको, you might sometimes feel that there is some Anisur speaking through her or some Sylvia Plath is speaking through her, but not necessarily so. They speak in their own voice. और political protest जो है इनके यहाँ, social protest जो है इनके यहाँ, these are something very, very remarkable points that they have raised, and the great experiments in the language that they have made. So the women poets are very virile, very important, and very powerful voices have come to us from Pakistan. And the younger poets, hosts of them are writing from there. Unfortunately, वजह उसकी आप, you can understand, the challenges that they are facing in Pakistan are not the challenges that we face here in Pakistan. Different kind of, I'm talking of the political oppression. And it has all come out of this. आप याद करिए कि वो एक जमाना था वहाँ पे कि जब हिजाब और उसके बाद टेलीविजन पर औरतें नहीं आ सकती, तो एक आवाज निकलना शुरू हुई थी वहां से. That is how these poets came to write. So there are many poets, but in India, unfortunately, we don't have many women. There are women poets. There are women. I'm not saying that there are not women poets, but I'm talking of the more powerful voices who have made a mark and who are going to stay on. They're definitely very important poets there. Thank you. Sangmitra Malik has made a comment. उन्होंने कहा है कि जो आप अभी बात कर रहे थे कि लिरिसिस्ट अच्छा नहीं लिख रहे, वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की है, जो कि यंग फिल्म गोअर्स की बात को मानना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, और वो जो हैं वो चीप और एक्सेप्टेबल पोएट्री जो है उसको एक्सेप्टेबल उनको लगती है. तो इसकी वजह से शायद जो है अब आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि अगर कहीं पे कोई बात हल्की हो रही हो और अगर आप बहुत एक अच्छा सा जुमला बोले तो आपकी बात रह जाएगी, आपका जुमला याद रह जाएगा. बिल्कुल ठीक है ना. It will retain in the memory. It will not disappear. It will not vanish. It will be there. तो अगर चारों तरफ एक खास तरह की म्यूजिक बज रही है तो उसमें अगर कोई दूसरी धुन कोई सुना दे तो फर्क पड़ जाएगा. और वो अप्रिशिएट भी हो रही है. हाँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं, बिकॉज इट्स द मनी इज द लैंग्वेज. तो वही है, उसी की जबान बोल रहे हैं सारे लोग. लेकिन इसमें अगर कोई दूसरी बात अगर कोई कह जाए, और कह सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कह सकता, वो कह सकता है, तो अगर आप ऐसे ही कमाना मकसद है तो उसमें भी एक अच्छा टेस्ट क्रिएट किया जा सकता है जिसमें विट हो, जिसमें ह्यूमर हो. लेकिन विट तो एक ऐसी चीज है कि एक ऐसा शख्स जिसने पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड पर्सन, लेकिन एक विटी चीज बोली है उसके सामने तो उसकी बातें खिल जाएंगे, लगेगा यस दिस इज इट एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. तो उसी तरह से कोई सॉन्ग राइटर या कोई चीज उसी दुनिया में रह के अगर कोई अच्छे सा एक सेंटेंस निकाले, एक अच्छी सी लाइन निकाले, तो इट विल हैव इट इम्पैक्ट, इट विल स्टे ऑन. हाँ बिल्कुल ठीक. आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि जो अच्छे पोइट हैं हमारे पास फिल्म में भी, जैसे गुलजार है, जावेद हैं, या प्रसून जोशी हैं, या और भी हैं, उनको लोग सुनते हैं, इसीलिए उनका नाम बना है. हालांकि वो बहुत कॉमन प्लेस चीजें नहीं लिखते, लोग उनको भी अप्रिशिएट करते हैं. थैंक यू वेरी मच अनीस जी. It was a wonderful session. I think I'll now pass on the baton to Jasmeet Nayyar. Yeah, she is going to kind of say the last word. Thank you to you and the audience on behalf of the Maja House. Jasmeet Nayyar ji. जी, सबसे पहले तो आज की गुफ्तगू इतनी जबरदस्त रही है कि घड़ी देखने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें वक्त का और आज खास करके मैं मेंशन करना चाहूंगी, बसंत है, आपने बात की कि आप नज़मों को भी एंथोलॉजी उनकी तैयार कर रहे हो, तो वो हफीज की मैं सुबह से गुनगुना रही हूँ, लो फिर बसंत आई, और मैं लगाए भी हूँ बसंत थोड़ा सकल बन फूल रही सरसों. ऐसे नहीं, मुबारक हो बसंत. कहते हैं ना जब बसंत आती है तो सारमा, सर्दी, शीत वो फिर रफ्तारी पे होते हैं जाने को. देखें कल का मौसम क्या कहता है. और आज की गुफ्तगू के लिए रहमान साहब तहे दिल से शुक्रिया, और गुरुपदेश एंड द टू खैराज, दीप खैरा एंड प्रताप खैरा, एंड ऑल्सो सैफ साहब जिन्होंने हमारे साथ शिरकत की आगे. अच्छा रहमान साहब, आपकी भी गजलें में आज पढ़ रही थी, तो वो अलग ही एक आपका फेज रहा होगा जिसमें आपने लिखी होंगी. अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके 2 शेर पढ़ दूं. जरूर पढ़िए साहब, माय प्लेजर.
and my privilege as well. दोस्तों, रहमान साहब की गजल है, वो लिखते हैं तबीयत में ये सरशारी कहाँ से अभी अच्छे थे भी आ गई, सभी अच्छे थे, ये बीमारी कहाँ से बहुत अच्छी। ये सरशारी कहाँ से आ गई। खूबसूरत खूबसीरत दोस्तों की ये महफिल, खूबसूरत दोस्तों की, यहाँ ये शक्ल सरकारी कहाँ से आ गई। बहुत अच्छे। अगर मैं आपको बताऊं, ये शक्ल भी सरकारी ही है। और कहते हैं बहुत दुश्वार था आसान करना मसलों का, अब आसानी में दुश्वारी कहाँ से आ गई। बाकी सब तो सही है जनाब, मुझे ये बताइए, ये जो बीमारी आपको लगी सरशारी की, ये लगी तो आप कहते हैं you were always attracted to ghazals, I agree, लेकिन ये क्यों लगी, ये बता दीजिए बस। फिर मैं ये एक बिल्कुल हालिया गजल है। ये हाल में इधर क्या हुआ कि पैंडेमिक के जमाने में ये मैंने कहना शुरू किया और काफी चीजें मैंने कही। तो जब वो सर पे पानी पड़ता है ना, गर्म नहाते जाते हैं, तो उस वक्त मेरे पास कोई ना कोई मिसरा आता है जो बाद में शेर बन जाता है। कभी शेव करते वक्त, कभी आईना देखते वक्त। दीज आर वेरी स्ट्रेंज मोमेंट्स व्हेन आई कम। तो साहब एक दिन हम शेव कर रहे थे, आईने के सामने खड़े थे, तो ये मिसरा मेरे साथ आया कि तबीयत में ये सरशारी कहाँ से आ गई। ये बड़े अच्छा लगा, तो बहुत खुश थे उससे। तो फिर लगा कि नहीं यार, ये सरशारी तो बहुत ज्यादा देर नहीं रहेगी। तो फिर दूसरा मिसरा आया, अभी अच्छे थे, बीमारी कहाँ से आ गई है। बिकॉज एक तरह का वो है, अप एंड डाउन चलता है जिंदगी में। बहुत खुश भी हैं तो शायद अगला लम्हा उतनी खुशी का ना हो। तो दिस वाज अ गिफ्ट ऑफ द बाथरूम द डे आई वाज शेविंग इन द मॉर्निंग। क्रीम लगा हुआ है, आई वाज ट्राइंग। सो तबीयत में ये सरशारी कहाँ से आ गई है, अभी अच्छे थे, बीमारी का। अब वो आपने जो शेर पढ़ा कि ये महफिल खूबसूरत दोस्तों की, यहाँ एक शक्ल सरकारी कहाँ से आ गई है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब बड़ा मिसफिट हो जाते हैं। वो सरकारी लेके बैठ के, अच्छे लोग बैठे, प्यारे लोग हैं। तो these are the experiences that one comes across। और बीमारी तो लग जाए ना, इसका दिल से बड़ा ताल्लुक होता है। हम उस लिहाज से पूछ रहे थे। तो देखिए, दिल से जो ताल्लुक होता है वो तो है। और आप ये देखिए कि एक शेर मैंने कहा, कई लोगों को सुनाया, तो लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम अब भी ऐसे शेर कैसे कह सकते हो, ये उम्र हो गई तुम्हारी। तो वो शेर ये था कि था कि हिज्र से बात की विसाल के बाद। हिज्र यू नो इज सेपरेशन एंड विसाल इज यूनियन। सो हिज्र से बात की, मैंने बात की उससे विसाल के बाद, अब के आना तो माहो साल के बाद। सेपरेशन डोंट कम सो फास्ट। अब आना बहुत दिन के बाद आना। आई नीड यूनियन। तो समवन सेड के भाई तुम तो रिटायर भी हो गए, 65 क्रॉस भी कर चुके, 70 में आ चुके हो तुम ये शेर कहते हो हिज्र से बात की विसाल। हमने कहा देखो, ये अपने लिए नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए कहीं हो। It may be your story, not mine. So when you write something, it's not for you that you are all the time writing. You are right for everyone. That is the beauty of poetry. वैसे खूबसूरत शेर कहने की कोई उम्र तो होती नहीं। कोई होती नहीं साहब। शेर तो जवान होने चाहिए और दिलों को खा जाए। तो हिज्र से बात की विसाल के बाद, अब के आना तो माहो साल के बाद। शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी और तमाम दोस्तों की जो आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में शिरकत कर रहे हैं। और जुड़े रहिए माजा हाउस के साथ, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। I am also very delighted to be here, and I'm also very grateful to Maja House and all the members of Maja House who thought of inviting me. My dear friend Gurupdesh Singh, who has been a friend for a long time now. So, बहुत शुक्रिया Gurupdesh that you brought me here. Thank you very much, sir. One request is that I would like to be here. So, would you make space for me in your future programs? Yes, I think as soon as things open up, I think Preeti is also very keen on having physical sessions. If you send me like links, to have a physical session, I think वो भी होगा। और जब तक हम ऑनलाइन रहेंगे, so if you send me links, I will be very happy. We would love to do that. Yeah. Thank you everybody for being here. Thank you everyone. Great. Thanks a lot. Yes. Grateful to you all. Yeah. Thank you.